अब कॉम्बिनेशन में मेरे को कम बैक चाहिए बच्चों, जो टॉपिक तुम्हारा हुआ नहीं उसको पहले करो तुम लोग भी, और पॉइंट कॉम्बिनेशन के लिए भी तो गैप है ही ना बच्चों, और अभी कॉम्बिनेशन तक तो आई थिंक जो टॉपिक बहुत बार हो गया है। ओके, सो नो कॉम्प्रोमाइज नाउ। I know one chapter you were under prepared, but that is okay for Tuesday. What about Thursday then? And don't keep that excuse for the next test. ठीक है? Do it properly. ठीक है? तो acquired immunity was called as which line of defense? Specific line of defense. Okay. Sir, what are the properties of acquired immunity? What are the properties of this specific line of defense? First is specificity. What is specificity? Yes, Siddharth? Switch on. Okay. So what is this specificity? That the acquired immunity produces antibodies which are specific for that particular microorganism. So if it has produced an antibody against the leprosy, क्या है वो क्या है तो इसका मुझे बड़ा ध्यान नहीं था कौन सा बटन दबाया था मैंने, ये वाला कहाँ दबा दी भूल जा बंदर के रिमाइंड में मेरा वाला हाँ, अगर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बना है किसके अगेंस्ट, लेप्रोसी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो फिर जब टाइफॉइड का बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए वही एंटीबॉडी काम में आने वाला नहीं है, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके लिए दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा। सो इसका मतलब हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी क्या है बच्चों, स्पेसिफिक है। सो कहने से इट इज यूजिंग स्पेसिफिक बुलेट्स to kill specific pathogens. That is what is called as specificity. Understood what is specificity? The second is diversity. Okay, what do you mean by diversity? That your acquired immunity can recognize a diverse group of pathogens. Okay, it can recognize a diverse group of pathogens. Like a policeman, he is able to recognize a diverse group of antisocial elements. जब वो इंटरोगेशन के लिए बैठता है तो फ्रॉम हिज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ही कैन नो कि सामने वाला फाइनेंशियल स्कैमर है, कि रेपिस्ट है, कि ड्रगिस्ट है, कि टेररिस्ट है, कि क्या है, वो तुरंत पहचान सकता है एक इंसान को, बराबर है। तो उनको अलग अलग लोगों की पहचान होती है कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप के एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। तो वैसे तुम्हारी इम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजन, एंड अर्ली इन द लाइफ जितना जल्दी तुम्हारा एंटीजन से एक्सपोजर होगा उतना तुम्हारी इम्यूनिटी क्या होती रहती है बच्चों, स्ट्रांग होते हैं। व्हाट डू आई पॉइंट? सो समटाइम्स व्हाट आई फील इज अ पर्सनल ओपिनियन दैट हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा जो पैम्परिंग करते हैं अपने बॉडी को, ओके, ड्रिंकिंग ओनली बिस्लरी वाटर एंड ऑल दैट, that's not good. You should expose your body to a little bit of hardship also, and that is what makes it more stronger, the immune system. And that is one of the reasons bachcho, okay, when a child is born by natural birth through the vagina, the vaginal canal is lined by bacteria and mucus, all that goes into the body. So a naturally born child usko जैसे ही पैदा होता है उसका एंटीजन एक्सपोजर रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ उसके पहले से बचपन से क्या होता है, उसके एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा रहता है उसके अंदर, as compared to a child who is born by a C-section. It is generally assumed that the one who is born naturally वो शुरुआत से ही संघर्ष से गया है और पहले से उसको बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिल चुका है, तो he develops a good immune system. What my point? Because that gives the immune system the opportunity to recognize a diverse group of pathogens. You got my point? And that ability, there is a second property which is called as diversity. For every specific pathogen, it produces a different antibody. That is called as specificity. It can recognize a wide range of pathogens. It's called as diversity. And it has the ability to differentiate between self and
non-self. Immune system has the ability to differentiate between self and non-self. For the acquired immunity, there is a very important tuition teacher whose name is thymus. And I have told you it is located ventral to the aorta in the thoracic region. It's a bilobed gland. You remember? Thymus is a bilobed gland which is located ventrally to the aorta, and it's a tuition teacher. What's a tuition teacher? Well, you know what it does? The cells, immune system के cells that are maturing in the thymus, they are taught the difference between self and non-self. मतलब उनको सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाई दी जाती कि ये जो सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स है अपनी है, अपनी है, अपनी है। ये रेड ब्लड सेल्स है, अपना रेड ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप ए है, तो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सी एंटीजन होगी? ए एंटीजन। इसके अलावा अगर तेरे कोई रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन दिखता है, डिस्ट्रॉयड। गॉट माय पॉइंट? सो नाउ ऐसा जो सेल है इम्यून सिस्टम का जो मैच्योर हुआ है थाइमस में और वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, तो वो क्या खुद के रेड ब्लड सेल को अटैक करेगा? नहीं, क्योंकि उसको सिखाया गया। क्या सिखाया गया? कि ये रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन है ये फॉरेन है कि सेल्फ है? इसको मारना नहीं। अगर इसके अलावा कुछ भी दिखा तो किल इट। What my point? So that is why when during sexual intercourse, when the sperms are released in the vagina, the vaginal mucosal line shows the presence of white blood cells. Those white blood cells will recognize the sperm as a self cell or a foreign cell, and it will launch an attack against it. As a result of which, you require a high sperm count for a normal fertilization. Because your immune system cells has an ability to recognize self from non-self. And इसके से बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होता है कभी-कभी बच्चों। That sometimes what happens is your normal body cells, due to some reason, show a change in their surface proteins. आपके बॉडी के सेल्स अपने सरफेस प्रोटीन के अंदर थोड़े से क्या लेके आते हैं बच्चों लोग? चेंजेस, जिसकी वजह से अपने खुद के इम्यून सिस्टम के सेल्स उसको क्या समझ बैठते हैं? फॉरेन, एंड दे लॉन्च अ अटैक अगेंस्ट इट, and that results into the autoimmune disorders. Okay, when your immune system ka cells lose their ability of distinguishing self and non-self, you are going to suffer from autoimmune disorders. So when do you suffer from autoimmune disorders? When your immune system cells, they suffer a problem in distinguishing self from non-self. What my point? And that can occur because of multiple reasons. Okay, some of the examples you already know, like I have taught you locomotion, a disorder which is called as myasthenia gravis. You remember, where your antibodies are attacking your acetylcholine receptors. What my point? Sometimes the bacteria are playing bad. Bacteria playing bad मतलब there is a throat infection, okay? And उस throat infection cause करने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज बनाई जाती है, तो वो एंटीबॉडीज आपके किडनी के ग्लोमेरुलस के सेल्स की एंटीबॉडीज के साथ मैच कर जाती है। समझा मेरा बात? मतलब आपके इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज बनाया वो किसको मारने के लिए बनाया है? ये थ्रोट इन्फेक्शन के बैक्टीरिया के। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो बैक्टीरिया का कोट और आपका ग्लोमेरुलस सेल जो है किडनी के अंदर, उनके ऊपर की जो प्रोटीन्स है वो क्या हो गई? मैच हो गई। तो ये जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई गई थी, अब वो साथ साथ किसको भी अटैक करेगी चलो? ग्लोमेरुलस के सेल्स को। As a result of which there will be inflammation in the glomerulus, and that will cause Bright's disease or glomerulonephritis. क्या cause करेगा चलो? Bright's disease, which is also called as glomerulonephritis. There is a condition where your immune system attacks your own thyroid, your own hyaline cartilage. Okay, and these disorders are come under what? Autoimmune conditions, and they are a type of disorders when your immune system is not able to distinguish self from non-self. So this is a very important ability that your immune system has. It can distinguish between self and non-self. I will explain Sarvana. Okay. Then the fourth is your immune system
has got immunological memory. What does the immune system have, Uchilo? Immunological memory. Now, what do you mean by immunological memory? Last time, if you remember, that primary response and secondary response, इससे मैंने दो responses बनाए थे. The secondary response for antibody production is faster and it is more stronger. So your immune system remembers the attacker. Your immune system remembers the attacker. इसने मेरे को क्या किया था? Attack किया था. So second time the response is going to be faster and stronger. This is called as immunological memory. We'll discuss that later on. So these are the four properties of your acquired immunity. कि हर एक पैथोजन के लिए एंटीबॉडी अलग और ऐसे हम सिर्फ टाइफॉइड नहीं हजारों बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं. That is called as diversity. Immune system का sense can differentiate self from the non-self as well as they have the ability to remember the attacker. So future में the attack, okay, against that pathogen is going to be stronger. That is why we don't suffer from many of the disorders second time. What my points are mumps हो गया, गालगुंडिस जो बोलते हैं ना वो, फिर chicken pox usually you don't suffer it from twice until unless the virus has undergone mutations in the wild. I hope you got it. These are the four properties of your immune system. Now, what are the important cells of your immune system? Okay. Now, the cells are your white blood cells. That is the lymphocytes. Okay, kids? Who are the important cells of your acquired immunity? Lymphocytes. Okay? And we'll classify these lymphocytes as B lymphocytes and T lymphocytes. Okay. Now, in birds, in chicken birds, there is an organ called bursa fabricus. Okay. Now, yesterday only I read about this in a book by Bill Bryson. He mentioned that there were some researchers, okay, and one of a young guy like me, he गलत है यार, कम से कम बाद में तो हंसता, वो क्या हंसता है, ओके, तो ऐसी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व था और उसे ये ऑर्गन जैसे जिसका नाम क्या मैंने बोला बर्ड्स के तरीके ऑर्गन है जिसका नाम है बुर्सा फैब्रिकस, वो रैंडमली उसको कुछ ज्यादा उसका महत्व लगा नहीं कि कुछ ऐसे कुछ काम कर रहेगा ऑर्गन, तो उसने कुछ चिकन्स का वो बुर्सा फैब्रिकस निकाल दिया और अपना रिसर्च चालू रखा. उसके बाद आने वाले रिसर्चर ने ये नोटिस किया कि इसने जिन जिन चिकन का बुर्सा फैब्रिकस निकाला था उनका इम्यून सिस्टम एकदम ही वीक था. What my point? So it was a random discovery. The earlier scientist, he was working for something else, but ऐसे ही for some reason not related to immunity, he removed the bursa fabricus of those birds. And the next colleague who happened to study those chickens, okay, he came across that those birds who don't show the presence of bursa fabricus, they show very weakened immunity. There is antibody production उनका बहुत ही क्या है कम. Then we thought that okay, yes, the bursa fabricus is responsible for some immune system का cells, eventually leading to the discovery of the B lymphocytes. So the B comes from bursa of fabricus. What my point? So do we have somebody similar to the bursa fabricus? The answer is yes. It is a bone marrow. Which place, bachalo? Bone marrow. Bone marrow cells. You remember bone marrow? 11th standard tissues. Red bone marrow shows the presence of pluripotent stem cells, which can result in the formation of different type of white blood cells. And red blood cells, mainly the red blood cells. So the bursa fabricus, it is related to our different type of lymphatic tissues that are there in the human body.
What my point? And those lymphocytes are called as which lymphocytes? B lymphocytes. Okay, these B lymphocytes, they can differentiate into two types of cells. Okay, how many types of cells? Two types of cells. One is the plasma cells, and the other is memory B cells. Okay, and these plasma cells, within a second, they can produce thousands of proteins which are called as antibodies in the body humor, that is the body fluids. Okay, so upon activation, the B cells, B lymphocytes, can differentiate into the plasma cells and memory B cells, and the plasma cells will produce antibodies that will be released in the body fluids, and the body fluids is called as humor. And these antibodies which we'll study, this antibody will destroy the disease causing agent which is called as antigen. What do you call it? The antibody will destroy the antigen. And where are these antibodies released? In the body fluids. That is why this is called as humoral immunity, or the AMI, that is antibody mediated immunity. क्या कहते हैं उसको? Antibody mediated immunity. AMI, that is antibody mediated immunity or the humoral immunity. Okay? Whereas the T lymphocytes, it can differentiate into the helper T cells, which are called CD4 or CD8 cells. Then you have killer T cells, then memory T cells, and the suppressor T cells. So the T lymphocytes can differentiate into these four types of cells. That is helper T cells, killer T cells, memory T cells, and suppressor T cells. These helper T cells, they can release chemicals like the cytokines. Okay. Also called, there are other chemicals also called interleukins. Okay. As a result of which, they can activate the B lymphocytes, as well as they can cause the differentiation of the helper T cells into killer, memory and suppressor T cells. Okay, so we consider these helper T cells as an important gateway between the antibody mediated immunity and this cell mediated immunity. The immune system that you develop because of the T lymphocytes is called as CMI, or the cell mediated immunity. तो ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करते हैं, और वो खुद की प्रजाति मतलब हेल्पर टी सेल्स को भी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए इनटू किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स. What my point? So we consider the helper T cells as a very important alarm system, okay, which activates your immune responses by activating your acquired immunity. मतलब अगर आप देखोगे तो helper T cells जो है वो आपकी acquired immunity को activate करने में, जागरूक करने में बहुत ही important रोल प्ले करते हैं. तो अगर कोई पैथोजन इन्हीं हेल्पर टी सेल्स पे अगर अटैक करे, ओके, और वो भी एकदम स्टेल्थ मोड में छुप के, और अगर हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, तो बेसिकली वो अपना टोटल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या कर रहा है,
हाईजैक कर रहा है। आया बात समझ में? अगर किसी वायरस के पास वो क्षमता आ गई कि वो चुपके से किसको डिस्ट्रॉय कर सके, हेल्पर टी सेल से, तो वो डायरेक्टली आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को नॉक ऑफ कर देगा और इनडायरेक्टली आपके एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी वीकन कर देगा। आया बात समझ में? और फिर उस वायरस का आपके इम्यून सिस्टम पे टोटल कंट्रोल होगा और आप फिर कोई भी इंफेक्शन से अपने आप को नहीं बचा पाओगे। आया समझ मेरी बात? तो आप गेस करिए कौन है वो वायरस जो हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता होगा? HIV? यस और नो? तो ये जो मेरे वायरस जो है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसका नाम ही देखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन सिस्टम की इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है। एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन बीइंग्स की इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है कि ह्यूमन बीइंग्स की इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए हेल्पर टी सेल्स की जरूरत है। तो अगर वो हेल्पर टी सेल्स के ही काउंट को कम कर देगा तो उसने हेल्पर टी सेल्स को बढ़ाया कि डेफिशिएंट कर दिया? इससे उसका नाम क्या कर दिया? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसे कौन सा डेफिशिएंसी लेके आया? इम्यून सिस्टम के सेल्स का डेफिशिएंसी लेके आया। शायद मेरे बच्चों को बात समझ में आई? इसीलिए ये वायरस इतना खतरनाक है, क्योंकि आपके सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको खत्म कर देता। दैट इज व्हाई आपकी बॉडी अपने आप को किसी भी नॉर्मल इंफेक्शन से भी बचा नहीं सकती। आई होप यू गॉट माय पॉइंट? यस और नो गाइस? द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स किड्स ओवर हियर? The killer T cells. Okay, as the name suggests, these killer T cells, okay, their job is to produce chemicals like lymphokines, okay, that will create pores, that will create holes on the bacterial wall or the wall of the pathogen, and they will destroy it. So the killer T cells are involved in the killing of the pathogen. Okay, so that is why they are called which cells? Killer T cells. Who is the third type of cells? The memory T cells. The memory T cells, they give you a immunological memory. Okay, immunological memory means the memory T cells never forgive or forget. They remember the pathogen who had attacked them. So next time if he comes, the response is going to be faster and quicker. In short time, I'll tell you how these memory cells work. Suppressor T cells. I say the suppressor T cells wave the white flag. What do you mean by waving the white flag? Will they increase the immune attack or slow it down? What is the purpose there? कि ऑलरेडी आप उस पैथोजन के अगेंस्ट जंग जीत चुके हैं। अगर आप और लिम्फोकाइंस और ये सारे केमिकल्स बनाते रहोगे तो अल्टीमेटली किसको हार्म हो जाएगा बच्चों लोग? आपके खुद के बॉडी के सेल्स को। तो कोई तो होना चाहिए जो बताए कि भाई अभी फायरिंग बंद कर दो, हम लोग वॉर जीत चुके हैं, अब अपना इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देना? स्लो कर देना। कि कभी-कभी बॉडी को हार्म एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स से भी हो जाता है। समझे मेरी बात? Sometimes your body goes in an overdrive. इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि अपने क्लास में देखिए बच्चों, कुछ कुछ एकदम खट्टे अंगूर है बच्चों, हाँ? वो अगर बीच में बात करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ना मेरे को, कि नहीं आएगा? तो समझो मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको बाहर निकाला, मारा पकड़ पकड़ के, फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया और फिर उठा के कहीं सांगली गटर में डाल दिया मार मार के। इसको क्या बोलेंगे? स्टूपिडिटी बोलेंगे। इसको कहेंगे स्टूपिडिटी। ये मैंने रिएक्ट नहीं किया, ये शाहरुख खान जैसी ओवर एक्टिंग कर दी बच्चों। समझा ना मेरा बात? इसको रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ओवर रिएक्शन। ऐसा करना ही नहीं था मुझे, सिर्फ उसको मैक्सिमम क्या करना था? क्लास के बाहर। दैट्स इट।
और मेरा काम हो गया खत्म। बराबर है कि नहीं? तो कभी कभी इम्यून सिस्टम ना, इट कम्स आउट ऑल लॉक स्टॉक एंड बैरल एंड स्टार्ट्स किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिड यू गेट माय पॉइंट? व्हाट इज द इम्यून सिस्टम डूइंग? एक मच्छर आया, उसको मारने के लिए पूरा AK-47 निकाल दिया और मार दिया। अब मच्छर मरा नहीं मरा बात की बात है, लेकिन आपकी दीवार को क्या हो गया? आप समझे मेरी बात? तो कोविड-19 का वायरस अंदर आया, उसने आपके लंग्स के सेल को खोल दिया, अंदर चला गया, एंड योर बॉडी डिड अ साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब आंधी तूफान जैसा बना दिया। किसको? साइटोकाइंस को, एंड इट गिव एन एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और वो चक्कर में तुम जब वो वायरस को मारने जा रहे हो, वायरस कौन से सेल के अंदर है? लंग्स में। तो मर कौन रहा है? तुम्हारे लंग्स को भी अटैक हो रहा है ना कुछ लोग। सो 8 दिन के बाद वो वायरस वैसे भी मरने वाला है, लेकिन 8 दिन के अंदर तुम्हारी इम्यून सिस्टम ने, बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं, किसकी बजाई? किसकी बजाई हो? चलो, लंग्स की बजाई। समझ मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टूड माय वर्ड। किसकी वाट लगाई? लंग्स की वाट लगाई। समझा ना मेरा बात? तो ये जो आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स था, ये नॉर्मल था कि एग्जैजरेटेड था? ओके, ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो आया, उसमें कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ? तो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो गया। वायरस तो मर गया 8 दिन के बाद, आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आई नेगेटिव, लेकिन फिर द पेशेंट इज डिक्लेयर्ड डेड। बोले ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होने, मर गया। रिलेटिव्स क्या चिल्ला रहे, अरे को वायरस तो नहीं था। ये 8 दिन के अंदर जो डेथ हुआ है पेशेंट का, वो वायरस की वजह से हुआ कि इम्यून सिस्टम के रिस्पांस की वजह से हुआ? क्योंकि वायरस रिस्पांसिबल था, लेकिन सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग रहता है ना। जितना आप डरोगे, जितना फियर में आओगे, उतना आपका इम्यून सिस्टम और रिस्पांस करता है। इसलिए लोग डर के मारे, आधे जन तो नहीं, मेरा बात समझा? Just by listening that you were suffering COVID-19, half of them died. There were many people who died of fear also. You know that, Mr. Yes. हाँ, सच्ची मजाक नहीं करता। ऐसा होता है। इम्यून सिस्टम जो है ना, ऐसा काम करता है। कभी-कभी कैसा रिस्पॉन्स देता है? Exaggerated. So don't you think there has to be somebody who will wave the white flag? Yes. Who will wave the white flag? You know, suppressor T cells. What my point? Because if your immune system gives an exaggerated response, you will suffer from conditions like allergies or hypersensitivity. समझा? जैसे लिखते लिखते, मैं अभी तो नहीं है, लेकिन चौक से लिखते लिखते डस्ट पार्टिकल्स मेरे लंग्स में गए। What is the normal response? वहाँ नहीं मालूम तो चुप बैठो। आपके बॉडी में मास्ट सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? वो वहाँ पे जाएंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, ओके, 2-3 छींक आएगी, थोड़ा सा नाक में सेशम उड़ाएगा, और वो चौक के बॉर्डर को खत्म। एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या रिलीज हुआ? हिस्टामाइन। बहुत ज्यादा म्यूकस सीक्रेट हुआ, जिसकी वजह से आपके जो ट्रकिया और ब्रोंकियोल्स है, उनका अंदर का पूरा लाइनिंग किससे भर गया? म्यूकस से। बराबर है? जिसकी वजह से यू कैन ब्रीथ इन, बट यू हैव अ प्रॉब्लम ब्रीथिंग आउट, सो यू स्टार्ट व्हीजिंग ऐसा, एंड यू विल कॉल इट एज व्हिच अटैक? Asthma attack, asthma attack. What my point? So some of the people suffer from an asthma attack, others don't. Because the one who suffer from an asthma attack, their immune system has given out a exaggerated response. What my point? So immediately you take that pump, which releases antihistamine, and it dissolves all the mucus, and you start breathing normally. I have got my point. ये सब immune system है. How does it work now? Let me talk about that also. But are you clear with the properties and the basic cells that are involved in your acquired immune system? There is one more cell which is called antigen presenting cell. APC बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं उसको? चलो. APC. That is antigen presenting cells, or the APC.
Now, what does the name suggest? From the name, what can you correlate? What do you mean by antigen presenting cells? Okay, no idea. These are phagocytotic cells. Okay, they can bring about what, Buchulo? Phagocytosis. Many of them, they can bring about what? Phagocytosis. So see now, here there is a pathogen which has entered in your body. This antigen presenting cells, so this is an antigen presenting cell, it will come, engulf the pathogen, and after that, it will display the antigenic parts on its surface. It will go there, engulf the pathogen, और वो पैथोजन का जो एंटीजेनिक पार्ट था, डिजीज कॉजिंग पार्ट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, उसको अपने ऊपर क्या कर देगा बच्चों? डिस्प्ले कर देगा। और फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दे विल गो वेयर? They will go to the thymus, they will go to the bone marrow, and there they will encounter which cells? The B lymphocytes and the T lymphocytes. Say for example, it has encountered the which lymphocytes? T lymphocyte. Okay. Now the T lymphocyte will show the presence of surface proteins which are complementary to these antigenic determinants that are brought by the antigen presenting cells. Once again, listen, don't giggle here and there. ये कौन है? पैथोजन है। ये जो मैंने सर्कल्स और ये ऐसा बनाया है, वो कौन सा वाला पार्ट है उसका? ये उसके सरफेस प्रोटीन्स है, जो आपके जो सेल के ऊपर जो लॉक्स है, उसके साथ बाइंड होकर आपके लॉक को क्या करेगा? खोल देगा और अपना एंट्री ले लेगा आपके सेल के अंदर। समझा मेरी बात? तो इस एंटीजन को एंटीजन कौन बनाता है? उसके ये सरफेस के प्रोटीन्स, क्योंकि उसकी वजह से उसको क्या एबिलिटी मिलती है कि आपके बॉडी के स्पेसिफिक सेल्स को क्या करेगा? वो ओपन करके अंदर एंट्री ले लेगा। अब कौन आया? एपीसी। कौन है एपीसी? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने सबसे पहले उस एक पैथोजन को क्या किया? एनगल्फ कर लिया, खा लिया। खाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ा उसको, उसका जो एंटीजेनिक पार्ट था उसको अपने सरफेस के ऊपर क्या किया? डिस्प्ले किया, शो ऑफ किया। समझा ना मेरा बात? क्या किया उसने? शो ऑफ। क्यों किया शो ऑफ इसने? ताकि अभी वो अकेला जाएगा किसके पास? थाइमस के पास। किसके पास? बोन मैरो के पास। क्योंकि उसको पता है कि ये मेन पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको मैं एक्टिवेट कर सकता हूं। समझो मेरी बात। विश्राम बाग की गली में टेररिस्ट आ गया, ऐसे एक नहीं हजारों टेररिस्ट है, और एक बेचारा दुबला पतला मेरे साइड पुलिसमैन ऐसा मोटरसाइकिल पे जा रहा है। उसे देख तो लिया, देखो तो हजारों है ये। सीधा स्टोरी सुन यार, ऐसे हजारों कौन है? टेररिस्ट है। अब उसको मालूम है मैं अकेला मार सकता हूं उसको? नहीं। तो उसने क्या किया? एक टेररिस्ट को दबोचा, उसको मार दिया, और उसका जैकेट और उसका हेड गियर निकाला, अपने बैग में डाला, और वही बाइक पे किधर गया? सांगली पुलिस हेडक्वार्टर, जो बहुत बड़ा है ना वो, चलो जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पुलिसमैन होंगे, ये सो नो, और जाके अपने मेन सुपीरियर को दिखा दे, देखो ये टेररिस्ट है, मेरे पास प्रूफ है। तो मोमेंट दैट सुपीरियर सॉ दैट, व्हाट डिड ही डू? अलार्म बजा उसे, और फिर थाउजेंड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स क्या हो गए? सांगली के हर गली में चले गए, और जहां जहां उनको टेररिस्ट मिला सबको क्या किया? मारा। आपको लॉजिक समझा मैंने कैसे समझाया वो? तो समझो एक पैथोजन आया, जैसे आप गिर गया, आपने गिरी हुई हरकत कर दी, ओके, और यहाँ पे आपका घस पड़ गया, ऐसा घस पड़ गया बोलते ना हम, तो एक बैक्टीरिया अंदर घुस गया, एक एपीसी ने क्या किया? उसको एनगल्फ किया। अब एक नहीं हजारों अंदर आए यार, वो अकेला कितना देर को मारेगा? तो उसने चौथे क्या किया मुझे बताओ? शो ऑफ किया, मतलब एंटीजेनिक पार्ट्स को क्या किया? डिस्प्ले किया। कहां लेके गया उसको?
थाइमस के अंदर, वहां पे किसको दिखाया? हेल्पर टी सेल्स को। तो ये कौन सा सेल था, कहां गया हेल्पर टी सेल्स को? चलो ये है ना हेल्पर टी सेल्स, किसको दिखाया? हेल्पर टी सेल्स को, बराबर है। किसको दिखाया? बी लिम्फोसाइट्स को, किसको भी दिखा सकते हैं अभी, हाँ? और जैसे उनको दिखाया, व्हाट डिड दे स्टार्ट गिविंग ऑफ? अ इम्यून रिस्पांस। आई होप यू गॉट इट। सो लुक ओवर हियर गाइस, if this was the pathogen and this was the antigenic parts and this is the APC, who is it? APC। तो APC इसको डिस्प्ले करेगा कि नहीं अपने ऊपर, आया ना? ये कौन है? बैक्टीरिया है, और वो कौन है? APC है। फिर APC किसके पास गया? समझो बी लिम्फोसाइट्स के पास गया। किसके पास गया? बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये बाइंडिंग होगा, और फिर ये बी लिम्फोसाइट्स किसमें चेंज होंगे? प्लाज्मा सेल्स, एंड दीस प्लाज्मा सेल्स विल प्रोड्यूस अ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू योर बॉडी फ्लूइड्स। नाउ ये जाके हर बैक्टीरिया को अटैच होगा एंड इट विल डिस्ट्रॉय दैट बैक्टीरिया। I hope you got my point. So just imagine now, this is the bacteria, and now see, is the antigenic part same or different? Different. So when the APC will engulf it, will it show the triangle or will it show the square? Which you know? Square. I hope you are getting my point. Now when it will bind to whom? The B lymphocytes. The B lymphocytes will show the same type of receptor or different type? Different type. I hope you're getting my point. Yes or no, kids? So now tell me, when this B lymphocytes will produce a plasma cell, and the plasma cell will be producing an antibodies, what do you suggest? This A antibody or the B antibody? बराबर है? So if you change the attacker, then the type of antibody is also going to change. So can I say it is very specific for that particular pathogen? I hope you getting my point. And some B lymphocytes, who? Some B lymphocytes, they will change into which cells? Memory cells. And these memory cells will keep a part of the antigen on their surface. So next time when the bacteria comes, these memory cells don't have to go through all the procedure. मतलब APC आया, बाइंड हुआ, बी लिम्फोसाइट्स हुए, फिर प्लाज्मा बना, ऐसा सब कुछ नहीं होगा। सीधा ये किससे बाइंड करेंगे? एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन योर बॉडी फ्लूइड। सो सेकेंड टाइम the immune response is going to be slower or faster? Faster. First time it was slow. Why it was slow बच्चों? APC आया, APC ने बाइंड किया किसको? बी लिम्फोसाइट्स को। फिर बी लिम्फोसाइट ने क्या बनाया बच्चों? प्लाज्मा सेल्स। इन प्लाज्मा सेल्स ने क्या बनाया बच्चों? एंटीबॉडी। उसमें से कुछ किस पे डिफरेंशिएट हो गए? किस पे डिफरेंशिएट हो बच्चों? मेमोरी सेल्स। टाइम क्या है सबके लिए? सेकेंड टाइम क्या हुआ? यही मेमोरी सेल्स ने सीधा वो एंटीजन से बाइंड किया, क्योंकि उनके पास ये मेमोरी है, यही है वो मेमोरी। समझा मेरी बात? यही है वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के इसने मेरे को मारा था, तो उसका मैंने पार्ट अपने ऊपर क्या किया? डिस्प्ले करके गया। तो जैसी बैक्टीरिया से बाइंड किया, तुरंत जैसे क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडी। तो सेकंड रिस्पांस ज्यादा स्लो होगा कि मच फास्टर होगा? वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। I hope you got my point. So for example, हमने पोलियो का एक लूला लंगड़ा फेंगड़ा वायरस ले लिया, उसको अपन बायोलॉजी के लिए बोलते हैं एटीन्यूएटेड वायरस, मतलब उसके अंदर डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं है, बराबर है?
या तो एक कोविड-19 का जो वायरस है उसका सिर्फ एक छोटा सा स्पाइक प्रोटीन ले लिया, ओके, या कोई दूसरा बैक्टीरिया जिसका सरफेस का थोड़ा सा एक एंटीजेनिक पार्ट ले लिया और उसको अगर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया तो क्या होगा बच्चों? एपीसी जाएगा कि नहीं उधर? जाएगा। एपीसी उसको खाएगा कि नहीं खाएगा? अपने ऊपर उसको डिस्प्ले करेगा कि नहीं करेगा? डिस्प्ले करके किसके पास लेके जाएगा? बी लिम्फोसाइट्स एंड हेल्पर टी सेल्स, हाँ या ना? तो वो थोड़ा सा इम्यून रिस्पांस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो आपको हल्का सा बुखार भी आएगा वैक्सीन के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, बराबर है? लेकिन साथ साथ कौन से सेल्स फॉर्म होंगे? वेरी गुड, कौन से सेल्स होंगे? ये मेमोरी सेल्स किसको याद रखेंगे? वो एंटीजेनिक पार्ट को। तो सेकेंड टाइम जब रियल कोविड का वायरस आएगा या रियल पोलियो का वायरस आएगा या रियल समझो टीबी का बैक्टीरिया आएगा, आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पांस स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा। तो कहने से 99% चांस है कि सेकेंड टाइम आपको ये डिजीज होने वाला नहीं। इसलिए जो लोग ने वैक्सीन लिया कोविड का, उसके बाद भी अगर उनको इन्फेक्शंस हुए तो हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ही कम थे वो केस, एंड दैट इज अ फैक्ट बच्चों, यू कांट डिनाई दैट कि आउट ऑफ द lakhs of people who took vaccination, still they can suffer from COVID, na? Got my point? But the severity of the disease was less because your immune system was tackling the antigen for a second time. Because your immune system has a concept which is called as immunological memory. आप मेरे क्लास को समझ में आई? आइडिया समझ में आया कैसे चलता है सब? Yes or no? And this is the property of which immunity? Innate immunity or acquired immunity? Acquired immunity is called as the dash line of defense. The two important cells of the acquired immunity are B lymphocytes and T lymphocytes. Correct, bachcho? The B lymphocytes, they develop in different lymphatic tissues like the bone marrow, spleen, Peyer's patches, tonsils, MALT, जो मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। You remember mucosa, serosa, muscularis, submucosa, mucosa, mucosa के अंदर होता है MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, बराबर है? यहाँ पे कौन से लिम्फोसाइट्स बनते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। थाइमस में यहाँ पे कौन सा डिफरेंशिएट होता है? टी लिम्फोसाइट्स। B lymphocytes can differentiate into plasma cells and memory B cells. Plasma cells produce proteins which are called as antibodies. Antibodies can destroy the antigen by different means, which will come later on. I hope you got my point. Then the other is the T lymphocytes. They can differentiate into helper T cells, killer T cells, memory T cells, and suppressor T cells. Helper T cells will help in the differentiation of more helper T cells into killer, memory and suppressor, and also activates the B lymphocytes by functioning as antigen presenting cells. They can also function as antigen presenting cells. फिर कौन आया बच्चों लोग? कौन से cells? Killer T cells. Okay, through chemicals like lymphokines they can destroy the pathogens. फिर कौन आया? Memory T cells. They will remember the attacker. They never forgive or forget. The fourth one was suppressor T cells. What do the suppressor T cells do? They slow down your immune response. बराबर है? एक और टाइप के सेल्स है APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इनका जॉब क्या है? They are wandering policemen. They catch the antigen, display on their surface, bring that to the thymus or the bone marrow का cells, where they will activate the B lymphocytes and the T lymphocytes to produce a full-fledged attack. आया समझ में सबको? Okay. Did you understand the concept of immunological memory? What is this immunological memory? That there are some of the cells of your immune system which, after destroying the pathogen, display the antigenic parts on their surface. So there will be B lymphocytes. ध्यान दो, there will be B lymphocytes. क्या करेंगे वो? उस बैक्टीरिया को मारने के बाद क्या करेंगे? भूल जाएंगे उसको? नहीं, उसका
एंटीजेनिक पार्ट जिसने उसको स्टिमुलेट किया था उसको अपने ऊपर क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा इट विल गेट एक्टिवेटेड। वो एंटीबॉडीज को अपने ऊपर डिस्प्ले करके क्या करेंगे, वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर सेकेंड टाइम द इम्यून रिस्पांस इज गोइंग टू बी फास्टर एंड क्विकर। एनी क्वेश्चंस यार कुछ लोग? ये क्वेश्चन उसको बंद करो थोड़ा है। हां समझ में आया जितना भी पढ़ा कुछ लोगों ने, which are called as immunoglobulins. So remember a point over here that all antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. So immunoglobulins is a big class of proteins. It's not one protein, it's a big class of proteins. And one class of immunoglobulins is called what? Antibodies. So जितने भी एंटीबॉडीज है वो कौन है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। लेकिन जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो एंटीबॉडीज नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो आर ऑल एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स? यस, बट ऑल immunoglobulins are not antibodies. There are 5 main types of antibodies. Last lecture में आपको एक short form दिया था, GAMED. GAMED. So it is IgG, IgA, IgM, IgE, and IgD. Okay, and more or less this is their summarized function. G protects the body fluids. A protects your body surfaces. M protects the bloodstream. E is involved in hypersensitivity, inflammatory responses, and D activates your B lymphocytes. So if you look at the diagram below, can I say it's a Y-shaped structure? A typical antibody is a Y-shaped structure, and it shows the presence of 4 polypeptide chain. One antibody is made up of 4 polypeptide chains, out of which you will see that 2 chains are drawn longer like this. Correct? They are called as heavy chains. क्या कहेंगे उसको? Heavy chains. Heavy chains. And 2 chains are drawn shorter like this. Do you see them? What they will be called as? Light chains. So we have said that here, third point says that each antibody is made up of 4 polypeptide chains, H2, L2, 2 heavy chains and 2 light chains. So one antibody is which shape? Y shape. It is made up of 4 polypeptide chains, out of which 2 chains are heavy and 2 chains are light. Understood? So when I say heavy chain, it will be made up of more number of amino acids. A light chain is made up of less number of amino acids. And see the diagram and you will find out that who connects these 2 chains? SS दिख रहा है वहाँ पे? So we'll say that these chains are interconnected by disulfide bonds. What are they interconnected by? Disulfide bonds. Now, each heavy chain, look in the diagram. Each heavy chain is made up of 2 regions. If you see the basal region, नीचे वाला region, it is shown by orange color, and the top वाला region is shown by blue color. Okay, so there are 2 regions. One is called heavy chain constant region, and the other is called as the heavy chain variable region. What are the 2 regions? Heavy chain constant region and heavy chain variable region. So look at this black one. Do you see this region? I'll call it as the heavy chain constant region. Okay, followed by on the top there is a heavy chain variable region. Okay, similarly I will have a light chain also. Okay, and that light chain will also have 2 regions. One will be the light chain constant region, and the other will be the light chain variable region.
So every chain has got how many regions? 2 regions. That is a constant region and a variable region. Depending upon the constant region, there are 5 types of antibodies: G, A, M, E, D. And within G, there will be many subtypes. Just to name them. That within the G, there will be GX, GY, GZ, GP. ऐसे hypothetically मैंने name किया. तो ये पांचों के बीच में उनका constant region भी differ करेगा. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये 5 अलग-अलग एंटीबॉडीज क्यों हैं? क्योंकि उनका constant region भी क्या करता है? Differ करता है. Variable का मतलब होता है different. वो तो differ करेगा ही. But ये पांचों का constant region भी आपस में क्या करता है? Differ करता है. इसलिए कितने टाइप के एंटीबॉडीज है? 5. So why do you get the 5 type of antibodies? Because they differ even in their constant region. But then the question is, when I am writing subtypes for G, X, Y, Z and P, do they differ in their constant regions? No. Their constant region is the same, but they differ in their variable regions. I hope the idea is clear. So each antibody is made up of 4 polypeptide chains, out of which 2 are heavy and 2 are light. So that is named as H2L2. The heavy chain has a constant region and a variable region. Light chain also has a constant region and a variable region. Okay. What is the constant region? The constant region is a region which will remain the same for a particular type of antibody. And a variable region will be different for all the antibodies. Okay. So if I have 10 subtypes of A, what will they remain same in? Constant. And what will they differ in? Variable. But if I compare G and A, what do they differ in? Constant. And variable. So GX, GY, GZ, GP, they have a same Constant. but different Variable. You understand the constant and variable region now? Okay. Now it is a variable region on which binds the antigen. So the variable region, it will go and bind to an antigen. So the variable region is called as antigen binding site. क्या कहते हैं उसको? Antigen binding site. Or it is called as the paratope. So we have this. ये लाइंस कौन सा रीजन है? कांस्टेंट रीजन. ये ऊपर वाला रीजन कौन सा है? वेरिएबल रीजन. ये कौन सी वाली चेन आ गई? Which is this chain? Light chain. Light chain में भी कितने regions हैं? 2 regions. कौन से? Constant and variable. अब जो एंटीजन है वो कहां पे बाइंड करेगा? वेरिएबल रीजन. मतलब कहीं ना कहीं अगर ये एंटीजन है तो उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स होंगे. किसके लिए? पैराटोप के लिए. अब ये देखो, ये V है ना, हाँ या ना, लाइक अ क्लेफ्ट. ओके. और ये भी V है, but can I say it is complementary, like a lock and a key. So now this particular region of the antigen is called as an epitope. What do you call it? Epitope. So epitope is a antibody binding region, and paratope over here. What is a paratope? It is a antigen binding region. So if I change the epitope of an antigen, like this is the antigen now, okay, and this is the, what is this?
epitope. Then what do you expect the structure to be there? Like this? Yes or no? Okay. So what is this region called? Paratope. That is the antigen binding region which will bind to the epitope. That is antibody. So can I say now the antibody will bind to a antigen and it will neutralize that particular antigen by forming an antigen antibody complex. Antigen antibody complex. So if the antigen changes, there is a possibility of what will change? Epitope. So will the antibody be same or it will be different? So the paratope will be changed. It will barabar se like a lock and key bind to the antigen and it will neutralize. Got it? So what do you expect? There are two bacteria. One is a typhoid causing bacillus and the other is a leprosy causing bacillus. क्या दोनों के सेल वॉल के ऊपर जो सेल सरफेस एंटीजेंस है वो सेम शेप के होंगे या अलग अलग शेप के होंगे? अलग अलग शेप के होंगे. तो जब आपका बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा तो उसका जो पैराटोप्स होगा वो सेम होगा कि स्पेसिफिक होगा? स्पेसिफिक. मतलब बराबर से मैच करेगा किसके अगेंस्ट और यहाँ पे बराबर से मैच करेगा दूसरे एंटीजन. इसका मतलब एज अ डॉक्टर if I do your serum ka test, blood serum ka test, and inside I find particular antibodies which are specific for typhoid, what did I say? That my patient is suffering from typhoid. I hope you got the idea of finding out which disease the patient is suffering from. Like for example, if you see Park sir's car parked down, 99% you will know that he is there in the office. Why? Because his car is there. तो सिमिलरली अगर हम एक पेशेंट के अंदर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी फाइंड करते हैं तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है किस बात का कि वो एंटीजन भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा ही. इसलिए तो बॉडी ने क्या बनाया? वो एंटीबॉडी बनाया क्योंकि हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. इसलिए एक टेस्ट है उसका नाम है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. क्या नाम है टेस्ट का? बच्चों लोग एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा बोलते हैं. क्या बोलते उसको? एलाइजा. एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ओके. When the HIV virus infects the human body, okay, after a particular time period, the human body will produce antibodies against the HIV, and those antibodies will be there in the body fluids. I hope you got my point. अगर HIV का वायरस एक इंसान के अंदर आ गया तो इंसान का बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है. और ये एंटीबॉडीज उसके ब्लड स्ट्रीम में क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है. तो इफ अ पर्सन हैज विजिटेड अ रेड लाइट एरिया and he thinks that he might get infected with HIV, and after a couple of months he goes to the doctor, how will the doctor confirm whether this man has got HIV or not? Will he check for the virus or will he check for the antibody against the virus? So if his body is showing antibodies against the virus, it means that somewhere or other the virus has infected it. So the first test, that is ELISA, will come positive, and there is one more confirmatory test also that is done. Got my point? Blotting technique, Western blotting technique is done. After the ELISA comes positive. तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट उन्होंने यूज किया कि अगर ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडी है इसका मतलब उसका स्पेसिफिक एंटीजन भी कहीं ना कहीं होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही प्रोड्यूस होती है. व्हाट माय पॉइंट? क्योंकि हर एंटीजन के पास क्या होता है? एपीटोप. वैसे हमारे एंटीबॉडी के पास क्या है? पैराटोप. पैराटोप किससे बाइंड करता है? एपीटोप से. क्या फॉर्म होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिससे फिर वो एंटीजन क्या होता है? न्यूट्रलाइज करेगा. I hope you got it.
So a typical antibody has got how many chains? Four polypeptides. Too heavy, too light. Clear everyone up to here? Okay. It is typically which shape? Y shape. The four chains, each heavy chain has a heavy chain, constant region, heavy chain. The five type of antibodies, they differ in their dash region. Yes, but constant to definitely. But within the same type, they only differ in their. They only differ in their variable. They are same in their constant. In order to bind to the antigen, antigen से bind करने के लिए कौन सा वाला रीजन इंपॉर्टेंट है? और वो वेरिएबल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट और द which will bind to the of the to form an antigen antibody complex. I hope you got it. Yes or no? Yes. A typical antibody can function in these three ways. To destroy the pathogen, it can function in three ways. One way is called what? Agglutination. जहां पे ये पैथोजन है, पैथोजन के सरफेस पे कौन है? एंटीजन है. A specific antibody will bind to it and it will bring about the lysis, that is the breakdown of that particular pathogen. एक तरीका हो गया. इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? Agglutination. The second way is, this is the pathogen. This is the bacteria. Okay. Now, there are certain antibodies which will coat the particular pathogen, and they belong to the class IgG, or it can be another one IgM. तो जैसे वो कोट हो गया, it will start increasing white blood cells, phagocytotic white blood cells का migration towards that particular pathogen. It's like this that एक कोई चोर है, okay, at night time when he comes out to steal, वो आराम से चोरी कर सकता है. लेकिन अभी हम लोग ने क्या किया, उसको पता नहीं, हम लोग ने उसके बॉडी के ऊपर एक इनविजिबल फ्लोरोसेंट डाई लगा दी. उसको नहीं पता कि उसके हाथ वाथ पे क्या है, इनविजिबल फ्लोरोसेंट डाई. So at night time when he comes out, what will happen? His body will start glowing, as a result of which he will be easily caught by the policemen who are searching for him. Have you got my point? So in this case, did the antibody directly kill that particular pathogen by lysis? No. Or it facilitated its phagocytosis? Facilitated its phagocytosis by a process which is called as opsonization. By a process which is called as Opsonization. So what happens in opsonization? The antibodies like IgG and IgM facilitates subsequent phagocytosis. मतलब वो लोग अपने आप को कोट कर देते हैं उसके वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स जो फैगोसाइटोटिक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गया, उनका माइग्रेशन उस पैथोजन की तरफ बढ़ जाएगा और उसको क्या कर लेगा, वो खा लेगा. आया सेकंड तरीका समझ में? काफी बार कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी को हार्म करने के लिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं. Now these antibodies will bind to those toxins and neutralize them. Okay, there will be a class of antibodies which can kill the bacteria. Yes, definitely. But what about the poison that the bacteria has already produced in the bloodstream? उसको भी तो क्या करना पड़ेगा? Neutralize करना पड़ेगा. So there are certain antibodies which will neutralize the toxins which are produced by bacteria. And that is a process which is called as neutralization. क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? Neutralization. Neutralization. Okay. So what are the three ways in which an antibody can function?
Agglutination, opsonization, neutralization. What is done in agglutination? It binds to the The antibody will bind to the antigen and that particular pathogen will undergo lysis. इसको हम लोग क्या कहेंगे? Agglutination. What happens in opsonization? The antibody will bind to the surface of the pathogen. Will it kill the pathogen directly? No. Then what will happen? Subsequent phagocytosis. उसकी वजह से क्या हो गया उसका phagocytosis कि आजू बाजू के white blood cells वहां पे माइग्रेट हुए और उसको phagocytosis. तीसरा, बैक्टीरिया अंदर आ चुका है, उसने अपने टॉक्सिन्स फैला दिए बॉडी में, तो अभी क्या होगा बच्चों लोग? उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज and that will be called as the process will be called as so these are the three ways in which an antibody functions: agglutination, opsonization and neutralization. An antibody production comes under which immunity? AMI. Who produces the antibodies? Plasma cells. The plasma cells are daughter of which cells? B lymphocytes. Who are the other daughters? Memory B cells. What do they keep? They keep the antibodies, Ayala, of that particular pathogen which had caused its formation. Did you understand my language? So antibody belongs to a class of molecules called all immunoglobulins are not not antibodies, but all antibodies are immunoglobulins. Clear everybody? What is the second point we remembered? There are 5 types of antibodies: G, A, M, E, and D. A typical antibody has dash shape. How many polypeptides? 4. They are 2 heavy and 2 light. Typical antibody is written as H2 and each heavy chain shows the presence of a constant region and a variable region. Constant region and a variable region. So there is a heavy chain, constant region, heavy chain, variable region. Okay. The 5 antibodies differ in both constant as well as variable. The variable region is also called dash. antigen binding. The variable region is also called dash. Antigen or paratome. It will bind to the antigen, and that antigen ka area is called as the epitope. Okay. The 4 polypeptide chains are linked together by disulfide bonds. An antibody can function in 3 ways: phago, that is agglutination, opsonization, and neutralization. Okay. So with this we finish the immune system ka part. Okay. So for a quick recap, now today we will be doing malaria also, but before that, सबसे पहले हम लोगों ने कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया था कि your body is constantly under attack of the disease causing agent. So you got cells, proteins, tissues and organs which fight against the disease causing agents. They are called as which system? Immune system. And the ability that they give is called as immunity. Immunity can be non-specific and specific. Non-specific is called as innate immunity. Innate immunity functions as physical barriers, physiological barriers, and the last one was cytokine barriers. Physical barriers में skin था, mucous membranes. Physiological barriers में बहुत सारा था, fever, pH वगैरह. तीसरा कौन सा था? Cellular. जिसमें phagocytotic और non-phagocytotic. Natural killer cells. बराबर है. Then the fourth type was cytokine barriers. You remember interferons, antiviral proteins produced by virus infected cells which protect the neighboring cells from future viral attacks. Then active immunity and passive immunity. Active, natural, active. Passive में artificial है. Mother's milk. First mother milk is called cholesterol. It is rich in dash antibody. IgA. And that immunity is which immunity? Passive, natural. Hyperimmunized horse वाली passive. Vaccination programs वाली second time infection नहीं होता अगर पहली बार हुआ है तो
एक्टिव नेचुरल सेल. ओके, पहला रिस्पॉन्स जो होता है it is slow. Second one is fast. Second response is always fast. Why? Because I told you memory cells will directly bind to the antigen and straight away start the production of antibody. What is the role of antigen presenting cells? They carry. They will destroy the pathogen, display the antigenic part, take it to the B lymphocytes and activate the immune system. B lymphocytes can be plasma cells and memory cells. Plasma cells bring out the production of antibody. Memory cells will carry immunological memory. The T cells are of 4 types: helper, killer, memory, suppressor. Who kills the pathogens? Who can get differentiated into other cell types? बराबर है? Who stops the immune system? And who keeps the memory? Memory. And then the structure of antibody. Is the immunity का part all clear बच्चों लोग? Yes. So today after going home you'll read it. Okay. Quickly copy it down and then we'll start with the disorders. Today we'll start with malaria. Okay. Do it fast. A protozoan disease, that is malaria. Okay. And it is caused by Plasmodium. Plasmodium vivax. Then Plasmodium malaria and Plasmodium falciparum. Out of which the last one is the most dangerous. It can be fatal. It can be life-taking. Okay? So how many Plasmodium are known to cause malaria? Plasmodium vivax, Plasmodium, and there is one more called Plasmodium ovale, O-V-A-L-E, but not mentioned in the text. Okay? And who is the most fatal one, dangerous one? Plasmodium falciparum. Okay? Here, the Plasmodium is the pathogen. So let me call it as the causative agent. So who causes malaria? Plasmodium species, अलग-अलग types. So इसके लिए हम लोगों ने उसको क्या कहा है यहाँ पे? कि it is a causative agent for malaria. It is a digenetic parasite. Okay. Now digenetic means it requires 2 hosts to complete its life cycle. Monogenetic means it requires only 1 host. Like in kingdom Animalia we had discussed tapeworm. Tapeworm is also digenetic. It completes its life cycle in humans and pig. But Ascaris completes its life cycle only in humans. Okay, so tapeworm is an example of digenetic. And Plasmodium is an example of digenetic. It will complete its life cycle in 2 hosts. Okay, the 2 hosts are primary host and a secondary host. What are the 2 types of hosts? Primary host and a secondary host. Okay guys? A primary host is the host where that causative agent will complete its sexual cycle. And a secondary host is a host where it completes its asexual cycle. So on what basis do we classify them as primary and secondary? Depending upon which life cycle it completes in that host. जहां पे वो अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा वो होस्ट को कहते हैं प्राइमरी. एंड इन दिस केस द प्राइमरी होस्ट is the female
Anopheles mosquito. Okay, and the secondary host is whom बच्चों लोग? Humans. Okay, the male Anopheles mosquito, it drinks the plant sap. Okay, whereas the female Anopheles mosquito, it takes a blood meal. It drinks her blood. So we say that it's taking a blood meal. But one thing we need to remember here that, okay, why does it take a blood meal? Because your human blood has red blood cell. Red blood cell is rich in hemoglobin. Hemoglobin has got iron. And the female Anopheles mosquito wants to provide this iron to its developing eggs. So the female Anopheles mosquito is not using your blood as a means of nutrition. It is going to use that iron for what? Development of its eggs. You got the point? Second thing is the association of the female Anopheles mosquito on the human body is for a very short time. As a result of which, in ecology, we say that the female Anopheles mosquito is not a true parasite from the definition of ecology. Got my point? कि पैरासाइट जो होता है उसका अपने होस्ट के साथ एसोसिएशन लंबे समय तक होता है. Got my point? लेकिन ये केस में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का एसोसिएशन ह्यूमन बीइंग के साथ लंबे समय तक है कि वेरी शॉर्ट टाइम के लिए. और यूजुअली एक पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है अपने खुद के लिए. ये आयरन ले रहा है अपने बेबीज के डेवलपमेंट के लिए. तो कुछ ऐसे टेक्निकल रीजंस है जिसके वजह से इकोलॉजी में हम उसको रियल पैरासाइट नहीं मानते. वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन समझ में आया आप लोग को? ओके. In this case now, if a human being has to suffer from malaria, the mode of transmission, I'll give you a few options. The mode of transmission will be contaminated food, contaminated water, or a bite by a female Anopheles mosquito. By a female Anopheles mosquito. Got my point? So who is the carrier of the plasmodium? So that is why it is called as the vector for malaria. The female Anopheles mosquito is a what bachalo? Vector for malaria, for the plasmodium. It carries the plasmodium from one organism to another organism. As sir has just started with biotechnology. Yes or no? Has he used the word vector over there? Yes. And you are told that vector is a DNA molecule which can carry your gene of interest from one cell to another cell. So vector is somebody who can be used as a vehicle. In biotechnology, it is a vehicle for gene transfer. In human health and disease, it's a vehicle for pathogen transfer. Did you get my point? In biotechnology, it is a vehicle for gene transfers. In human health and disease, it's a vector for pathogen transfer. आया बात समझ सबको? ओके. सो ये बात समझ में आई कि कब उसको प्राइमरी और कब उसको सेकेंडरी होस्ट मानते हैं. अगर वो अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उस ऑर्गेनिज्म में तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी होस्ट. सेकेंडरी होस्ट वो होता है जो यस. शैल वी स्टार्ट बच्चों? So now a female Anopheles mosquito visits the human body for a blood meal. कौन है बच्चों? Female Anopheles mosquito. Okay. It is sitting on the human body for what? A blood meal. You understood a blood meal? मतलब खून चूसने के लिए. Okay. And at that time when it is sucking the blood,
From its salivary glands, it releases the spores of Plasmodium. See, Plasmodium is a protist. It shows both sexual as well as asexual life cycle. It shows sexual reproduction as well as asexual. Asexual reproduction takes place with the help of different spores. We know that. Yes or no? Okay. So when the female Anopheles mosquito sits on the human body, tries to drink the blood from the salivary gland, she releases a type of spores in the human blood which are called as sporozoites, are released in the blood during the time of which meal I said? Blood meal. तो हिंदी भाषा में ऐसा बोलेंगे कि जब वो मच्छर काट रही है तो वो टाइम पे उसके सलाइवा में से अपने ब्लड में सेल्स रिलीज हो गए जिनका नाम क्या है? स्पोरोजोइट्स. I hope the class understood. Now, through the blood, the sporozoites will reach and infect the human liver. Okay? किसको इन्फेक्ट किया बच्चों? ह्यूमन लिवर को इन्फेक्ट. ओके? किसको इन्फेक्ट किया गाइस? And the liver is made up of cell. इसे बड़ा करके दिखाया मैंने आप लोग को सेल को. What is the name of the cell बच्चों? Hepatocytes. You all know, right बच्चों? Then the liver cells are called hepatocytes. तो मतलब ये sporozoites कहाँ गए? Hepatocytes. Yes or no? Good. Now, these merozoites, I'll show different symbols for the cells. ऐसे दिखते हैं कि तुमको समझाने के. अब ये sporozoites किस में गए बच्चों? Hepatocytes. Now they'll undergo cell division and they'll change into a new type of cell. Okay, and these new cells are called liver merozoites. आया समझ में सबको? स्पोरोजोइट्स ब्लड में थे. ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुंचे? लिवर सेल्स के अंदर. अंदर उन्होंने अपना सेल डिवीजन किया. अब वो स्पोरोजोइट्स हुए कि उनका साइकिल चेंज हो गया, स्टेज उनका चेंज हो गया और उन्होंने क्या बनाया बच्चों? लिवर merozoites. Now these liver merozoites will rupture the hepatocytes and they will be released in the blood. Who is released in the blood बच्चों? Who is released in the blood? Hepatocytes are released. Merozoites. So अभी ह्यूमन ब्लड में कौन है बच्चों? Merozoites. कौन से वाले merozoites? Liver merozoites. Clear everyone? Out of which some merozoites will go and infect who bachlo? RBCs. And some of the merozoites will go back and infect the liver cells again. So now, whom are the merozoites infecting? RBC. This is called the erythrocyte stage of the disease, because the merozoites have started infecting the RBCs. Before that, when they are in the liver cells, it is called as the pre-erythrocyte stage. क्या बोलते उसको?
Pre-erythrocyte stage. समझे दो स्टेजेस? पहला वाला स्टेज कौन सा था? प्री एरिथ्रोसाइट. अभी कौन सा स्टेज स्टार्ट हुआ? So who is infecting your red blood cells now, बच्चों? This is a red blood cell. And what has entered inside? What has entered inside, बच्चों? Merosomes. Gradually they'll change into cells called trophozoites, which will undergo cell division to form new cells called schizoids, which will undergo cell division and result in the formation of RBC merozoites. Did you hear me, everybody? तो लिवर के बाहर कौन आया? लिवर मीरोजॉइट्स. उन्होंने इन्फेक्ट किया किसको? RBCs. और आरबीसीज के अंदर जाने के बाद उनका सेल डिवीजन होते रहा, जिसमें उन्होंने क्या बनाया? ट्रोफोजॉइट्स बनाए, फिर बनाए साइजोन्स, फिर बनाया उन्होंने क्या? आरबीसी मीरोजॉइट्स. And in this process, they break down the human hemoglobin and they convert it into a toxic chemical which is called hemozoin. How does it go? Hemozoin. Hemozoin. So see over here now. अब ये जो आरबीसी मीरोजॉइट्स है, they will rupture the red blood cells and that releases a toxin called hemozoin. The moment your body detects hemozoin, it will result into a very high grade fever which can reach 103 to 104. So your body has detected what? Hemozoin, and in response to the hemozoin, the body will immediately elevate its temperature. You will have chills and fever. Okay? अचानक से टेम्परेचर एकदम राइज होगा, बहुत ठंडी होगी, और कुछ ही घंटों के अंदर टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा? खुद ब खुद नॉर्मलाइज हो जाएगा. So for a short duration, you will have a very high grade fever with chills. Chills समझ में आया? कपकपाहट. It's called chills. Clear everybody? Now what has been released in your blood, बच्चों? Hemozoids? Hemozoin? But which cells have come into your blood now? Use that word. What is it? RBC merozoites. RBC Merozoites. merozoites. Did you get this point? तो अभी हमारे ब्लड में what has entered बच्चों? RBC merozoites. Now some of these RBC merozoites will reinfect whom bachalo? RBCs. Okay? And usually this cycle will take in some cases of species say 48 hours. ये साइकिल कंप्लीट होने के लिए. कौन सा वाला साइकिल? कि वो आरबीसी मीरोजॉइड कहाँ गया? रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट किया, फिर उसने वहां पे साइजोन वाइजोन बना के फिर से आरबीसी को रप्चर करके फिर से हीमोजोइन रिलीज किया. कितना घंटा गया उसके लिए? 48 आवर्स. ओके? तो आज कौन सा दिन है समझो? सैटरडे है. तो सैटरडे शाम को बुखार आया. कितना? 103 104. बराबर है? आपने एंटीबायोटिक ड्रग दे दिया. ओके? सुबह तक फीवर सबसाइड, बॉडी में वीकनेस है. अगला फीवर का बाउट कभी आएगा? 48 आवर्स के बाद शाम के टाइम पे. व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट फीवर का बाउट कब आएगा? अगले 48 आवर्स के बाद शाम को. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. तो एक डॉक्टर को ये पैटर्न पता रहता है, तो जब उसको पेशेंट वो पैटर्न में बताता है कि लास्ट टाइम मुझे ये बुखार आया था, इतना आया था, वो टाइम पे आया था, और अभी एक दिन मैं ठीक था, आई वाज फीलिंग वेरी नॉर्मल, बुखार आया नहीं, फिर से अभी मुझे बुखार आया, सिर्फ उतना ही आया. तो एक पैटर्न है. ये पैटर्न किसका है? मलेरिया के बुखार का पैटर्न है.
आया बात समझ में आप सबको? इसमें अलग अलग टाइप्स है, मैंने एक 48 आवर्स वाला बताया, इसमें टाइप्स है, क्वाटरनेरियन मलेरिया, टर्शियरी मलेरिया, ऐसे अलग अलग क्या है उसमें टाइप्स आते हैं। आई बात समझ में? एक टाइप ऐसा है जहां पे बुखार हर 48 आवर्स के बाद आएगा। शायद मेरे क्लास को समझ में आया जितना आया था। जो बाकी के जो आरबीसी मेरोजोइट्स है, they will change into male gametes, and which gametes? Female gametes. Okay? Are we clear up to here? Mosquito came for a blood meal. From its salivary gland it released what? Sporozoites. कहाँ गए वो? लिवर। लिवर में क्या बन गया उनका? वीरोजोइट्स। हेपेटोसाइट्स को रप्चर करके बाहर आए, फिर किसको इन्फेक्ट किया? आरबीसी को। कुछ जाके फिर से किसको इन्फेक्ट किया? लिवर को। यहाँ पे इन्फेक्ट करके आरबीसी को फोड़ दिया पूरा। उसमें से क्या रिलीज हुआ? हीमोजोइट, जिसके वजह से आपको बुखार आया। बचे हुए उनके सेल्स बाहर आए, फिर से क्या किया उन्होंने? आरबीसी को री इन्फेक्ट किया। कुछ सेल्स क्या बन गए? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आया ना? अब देखिए, नाउ a mosquito visits you for blood meal. A mosquito visits you for blood meal. And now when it is taking a blood meal, along with your blood, during the blood meal, these gametocytes enter the female Anopheles mosquito. समझा क्या हुआ अभी? कि when she is taking the blood meal, what is going into her body? The male and the female gametocytes. That is the male and the female gametes, which will undergo what बच्चे लोग? Fertilization in her gut. उसकी पेट में ही आने वाला ना सब. So fertilization will take place in the gut, result in the formation of what बच्चे लोग? किसका zygote? Anopheles का zygote कि plasmodium का? I hope you getting my point. आया ना? And that will further result in the formation of an ookinete and a oocyst. Now this will undergo what बच्चे लोग? Meiosis, and result in the formation of haploid cells, which are called as what? Sporozoites. And this ookinete will rupture the gut wall, and these sporozoites will reach the salivary gland of the female Anopheles mosquito. So when the female Anopheles mosquito will bite another human being for what? Blood meal, what will she inject? The sporozoites. But my point here, when the female Anopheles mosquito is taking the blood meal, when the female Anopheles mosquito is taking the blood meal, along with the blood meal, what does she take, which love? Gametocytes, the male and the female gametes. What will happen to the male and the female gametes? They will fuse, resulting in the formation of the zygote. Where will the zygote be formed? In the gut wall, right? And in the gut wall, it will result in the formation of an ookinete and a oocyst. It will undergo what? Meiosis, rupture the gut wall, and now form haploid cells, which are called as sporozoites. These sporozoites will reach the, which will female Anopheles mosquito infected another person. Got the life cycle, everyone? Clearly understood? So if you want to eradicate malaria, you need to kill the female Anopheles mosquito. Got my point? Where does the female Anopheles mosquito breed? Stagnant water. Where does it breed, Bachelo? Stagnant water. Stagnant water. Okay? So that is why if you enter into the Prarambhaka premises, left side we have got that lotus ka plant. We have made a point to keep some small fish, if you see, they swim in that water.
These are called gambusia fish, or in Marathi they are called gappi masa. Okay, and they are known to eat the larvae of the mosquitoes. I hope you got my point. So if there is stagnant water nearby, what preventive method to keep gambusia fish? What it will eat? The larvae of mosquito. Similarly, if you see, I don't know in Sangli it happens or not, the local government agencies, the VMC, here the Sangli Municipal Corporation, they spray a smoke thing on uh, the corners and the dirty water. There will be some men who will be carrying those pumps, spraying. It decreases the surface tension of water. As a result of which, when the mosquito will lay the eggs, they will not float on the surface of the water. They will sink down and they'll die. I hope you got my point. So if you want to stop the spread of malaria, what do we need to do? Kill the female Anopheles mosquito and prevent it from breeding. Okay? What will be one of the signs, early signs of malaria? One, swelling in the liver, bachlo. That is called hepatomegaly. Liver में swelling. The second sign is high fevers. Who causes the high fevers? Hemozoin. Okay.